Okay, how is everyone? कैसे हो सभी लोग? चलो, let me run a test. I just want to know if you are able to see the screen and if my voice is audible or not. Let me know. Yes. Am I audible to you? Is my screen visible? Everyone, please let me know. Okay, thank you. One answer I got. Very good. चलो ठीक है, बता दिया तुम लोगों ने. Okay, so on this note, we will start with the class, है ना? I was just waiting for some of you to join. Now let's start. आज की प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या फिनिश किया? ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी कवर्ड इन कैपेसिटर. आई वाज डिस्कसिंग विद डायलेक्ट्रिक. मैंने आप लोगों को ये बताया कि डायलेक्ट्रिक होता क्या है. सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जो डायलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है? वो एक इंसुलेटर होता है ना? ये एक इंसुलेटर है. और डायलेक्ट्रिक कितने तरह के थे? दो तरह का डायलेक्ट्रिक था. एक था हमारा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक और एक था पोलर डायलेक्ट्रिक. पोलर डायलेक्ट्रिक का मतलब ऐसा डायलेक्ट्रिक जिसके इंडिविजुअल एटम्स के पास पहले से डाइपोल मोमेंट है. डन. एंड नॉन पोलर का मतलब ऐसा डायलेक्ट्रिक जिसके इंडिविजुअल एटम के पास पहले से कोई डाइपोल नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड? जब हम डायलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है? इन केस ऑफ पोलर, ऑल द डाइपोल्स गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? दिस हैपेंस एंड फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना आया था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका वैल्यू मैंने कितना बोला था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट अगर मानते हो तो ई नॉट बाई के, वेयर के इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? इन नॉन पोलर थिंग व्हाट वाज हैपनिंग, सिंस इसके इंडिविजुअल एटम्स के पास डाइपोल नहीं था, द मोमेंट वी स्विच ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपेंस, वो डाइपोल क्रिएट होता है एंड दे आर क्रिएटेड इन सच अ वे कि सारे डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं. एंड सेम थिंग विल हैपन हियर. यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ए नॉट बाई के. Why dipoles were getting aligned in the direction of electric field? Because जब वो कोई भी नेचर में कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम when theta, that is angle between dipole and electric field, is 0 degree, and that is why this and this. ठीक है. इसके बाद मैंने आप लोगों को दो चीज बताया था. एक था हमारा कैपेसिटर था, ठीक है. इस पे इनिशियली प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है. इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बैटरी. देन देयर वाज सेकंड केस. सेकंड केस में मैंने क्या बोला था कि हमारे पास कैपेसिटर है एंड इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी. इन बोथ केस व्हाट वी वर डूइंग, वी वर इंसर्टिंग डायलेक्ट्रिक. यहाँ भी हमने डायलेक्ट्रिक डाला और यहाँ भी डायलेक्ट्रिक डाला, ठीक है. इस केस में क्या हो रहा था? चार्ज यहाँ पे कंजर्व है. और यहाँ पे चार्ज क्यों कंजर्व है? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, राइट? यहाँ पे चार्ज क्या होगा? इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक डालते हो, कैपेसिटी बिकम टाइम्स k times it increases. Here also capacity will increase k times. और अगर कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, बैटरी इज देयर, सो इट विल ड्रॉ मोर चार्ज फ्रॉम द बैटरी, सो चार्ज विल इंक्रीज ओवर हियर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था? ड्रॉप कर रहा है k टाइम से. सिमिलरली पोटेंशियल difference was dropping by k times, and here electric field and potential will remain constant because they are connected with a battery. उसके बाद फाइनली हमने एनर्जी की बात करी थी. एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैंने बोला था हाफ सी वी स्क्वायर लिखकर चेक कर लो, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख के भी चेक करो, सेम आंसर यू विल बी गेटिंग. So here C is becoming K times and V is remaining constant. So energy is becoming K times. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एनर्जी चेक करते हो तो Q स्क्वायर बाई 2c फॉर्मूला मैंने बोला था, रख कर देखो. अगेन you can also check it with half CV square formula, and here you will find that Q is constant, C is increasing K times, so here energy will become K times. So this was the distinction. यही मैंने previous class में पढ़ाया था.
तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूंगी विथ व्हाट, विथ ए क्वेश्चन। चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। एवरीवन सॉल्व इट, let me know what answers you are getting। ठीक है, टेक आउट योर कॉपीज, टेक आउट योर पेन्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, you can send me the answer also in the what, in the message box, but also you can vote here in the poll। ठीक है, चलो, everyone come on, everyone should do it। जेएमबी गांधीनगर, नवदीप, कौशिक, श्रेया, केशव। Kaushik, you are from which JNB? Shreya also, you are from which JNB? JNB, Hawaii. Okay. That is in which region? Pune or Hyderabad? Okay, Ceylon region. Great. I'm so happy to see you there. Tripura. Yes, that's a very beautiful place. I have been to Ceylon for some 7 or 8 days. Beautiful place, really. Chalo, anyone who got the answer? Okay, I got so many options. 7 of you has answered, and 2 of you are correct. See here, let me do it for you. Okay, just give me some time. So here, a parallel plate capacitor is of area 6 centimeters square. So this parallel plate, chalo, I'm drawing it vertically. So this parallel plate has area of how much? 6 centimeters square, and separation 3 millimeter. This whole separation is how much? 3 millimeter. The gap is filled with 3 dielectrics, and this gap is filled with 3 dielectrics, K1, K2, and K3. Okay? The dielectric constant of a material which gives same capacitance when fully inserted in above capacitor. So question ये कह रहा है कि if in place of keeping three dielectric, what if we just want one dielectric inside, but condition is what? Whatever capacitance is here, the same capacitance is here. So tell the value of that dielectric, that single dielectric. कितना होगा? Done है? So for that, what we will write? First, we will try to calculate C equivalent of this system of capacitors, because here there are how many capacitors in the first diagram? If you see, if I call it first diagram, you just see here, this is one plate, this is second plate, this is third plate, this is fourth plate. कुछ ऐसा दिख रहा है? This is not a plate, this is not a plate, but since we have put some dielectric, because of adding dielectric, what is happening? A boundary is appearing, a boundary which is separating one media for another. So we can call it imaginary plate. Okay. Why imaginary plate? Because in this region there is one media, in this another, in this another. So we can see there are 3 different capacitors. चलो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. So let's say first plate has a potential of V1, then second plate cannot have same potential as V1 because these two plates are not connected, they are isolated, right? So इसको बोलो V2, इसका potential V3, इसका potential V4. So if I talk about first capacitor, that is having media of dielectric constant K1, it has a potential difference V1 minus V2. Second has a potential difference of V2 minus V3. And fourth has a potential difference of V3 minus V4. They are not in parallel.
Potential difference is different. Now, are they in series? Yes, because they are end to end connected. Like where one is ending, another is starting, right? So they are end to end connected. It is a series combination. डन है. It is in what? It is in series combination. अब चलो एक काम करते हैं. What we will do? Equal thickness. These three dielectrics have equal thickness. So it has a thickness of 1 millimeter. It has a thickness of 1 millimeter. It has a thickness of 1 millimeter. Now let's calculate C1. C1 का वैल्यू कितना होगा? So that will be equal to K1 K1 into epsilon naught area. Area तो same है. Area is same as that of bigger plate, that is 6 centimeters square, right? Because plates area for all these plate capacitors are same. So epsilon naught A by separation. Separation यहाँ पे कितना है? 1 millimeter. चलो 1 millimeter को मैं small d मानती हूँ. ठीक है. So यहाँ पे I'm writing a small d. Now what will be the C2? C2 will be K2 epsilon naught A by D, because there also thickness is same. What will be C3? C3 will be K2 epsilon, sorry, K3 epsilon naught A by D. ठीक है. Now if they are in series and you will combine them in parallel, है ना? So चलो epsilon naught A by D को मैं C naught लिखती हूँ. Suppose कर लो C naught. So this is K1 C naught, this is K2 C naught, and this is what? This is your K3 C naught. Done है. Now let's write 1 by C equivalent. So this will be equal to how much? 1 by K1. K1 का value कितना है? That is 10. So 1 by 10, how much? Since they are in series, we will add them. Okay, I inverted the question actually. I'm really sorry. The one I'm solving became a different question. Oh God. क्योंकि मैंने प्लेट को वर्टिकल कर दिया. ठीक है. But concept whatever I have given you is correct. I will also explain this with this diagram. चलो पहले ऐसे कर लेते हैं. ठीक है. But answer we will get as different. I will show you how. So यहाँ पे देखो 1 by 10 लिखोगे और C naught plus क्या लिखोगे? 1 by 12 C naught plus 1 by 14 C naught. So this way you will get 1 by C equivalent, and same C equivalent we need here. So here you will write C equivalent is equal to how much? K equivalent epsilon naught A by 3D. Why 3D? Because if this is D, then this whole is how much? This is your 3D. अब एक काम करो, यहाँ पे C equivalent हमें इतना मिला है. That value of C equivalent you write here. ठीक है. So इसको आप क्या लिख सकते हो? K equivalent C naught by 3. K equivalent C naught by 3. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1 by K equivalent C naught 3 equal to 1 by 10 C naught plus 1 by 12 C naught plus 1 by 14 C. So you will get from here answer of K equivalent. If plate was vertical and this was kept like this. ठीक है. लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ और था यार. आई एम सॉरी. यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसा है. क्वेश्चन इज दिस and now we are putting dialectic like this. एक second. Let me show you. I have explained the concept, so you will be able to do this also. And this is more easily done. यहाँ पे देखो 3 dialectic हमने रखा. K1 रखा, K2 रखा, K3 रखा. ठीक है. Now what is happening? K1 has a plate, like there are 3 sections getting generated. So this is one capacitor, this is one capacitor, and what is another capacitor? This is another capacitor having the media of dielectric constant K2, and then there is third capacitor, and this is our third capacitor. It is having in between plates media K3. अब देखो यहाँ पे this plate, if this whole plate has area A, then this will have area A by 3 because equal thickness dielectric are kept. This is A by 3 and this is A by 3. ठीक है. So now if you look at, this is one capacitor, this is another capacitor, this is another, and they are connected. They are what? They are connected like this. है ना? So are they in series or parallel? If I say you, suppose कर लो, this plate has a potential of V1 and this whole plate has a potential of V2. So potential difference between
for capacitor C1 is V1 minus V2, because like for capacitor C1, this portion of plate is the part of this whole plate, right? So if this whole plate is maintained at potential V1, this portion also has potential V1. उसी तरह से यहाँ पे भी इस portion का भी potential क्या होगा? V2 होगा. Similarly, इस capacitor की अगर बात करो तो potential difference V1 minus V2. Here it is V1 minus V2. So they are in parallel. अब अगर यहाँ पे C equivalent लिखोगे तो क्या लिखोगे? फर्स्ट प्लेट का कैपेसिटी लिखो, सो दैट इज K1 epsilon naught A by 3D. D is what? Here D I am taking this whole. दूसरा क्या होगा? K2. Since they are in parallel, I am adding them like in series. Epsilon naught A by 3 into D plus K3 epsilon naught A by D into 3. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को अगर मैं सी नॉट मानूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवन का वैल्यू रख दो, 10 था, सो दिस इज 10/3 सी नॉट प्लस यहाँ पे कितना होगा? दिस वाज 12 आई गेस, सो 12/3 सी नॉट, और यहाँ पे क्या था? 14 सी नॉट बाई 3, like that, C equivalent. And we have to replace it with single dielectric. So for this single dielectric, capacitance will be how much? C equivalent will be equal to K equivalent epsilon naught A by D. ठीक है? Yes, JNB भावनगर. Thank you. So this is this. ठीक है? अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दो. C equivalent को यहाँ पे क्या लिख दो? यहाँ पे लिख दो K epsilon naught K equivalent epsilon naught A by D को क्या लिखोगे? C naught. कट करो, you will get the answer. Very good afternoon. ठीक है? सो दिस इज हाउ. चलो अच्छा हुआ मैंने गलती से ये बताया, क्योंकि हमने दोनों ही केस को डिस्कस कर लिया. नाउ आई फील लाइक यू विल बी वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच इज इन पैरेलल, विच इज इन सीरीज आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक. तो चलो फास्ट बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है. एवरीवन गॉट द क्वेश्चन? सबका क्लियर है? अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को फटाफट करके जल्दी से बताना मुझे, ठीक है? इसमें टाइम नहीं लगेगा बिकॉज यू डोंट नीड टू डू द कैलकुलेशन. एवरीवन फास्ट, लेट मी नो. JNB भावनगर, यस. बट व्हाई यू जॉइन सो मच लेट? कैन आई नो? यू शुड बी ऑन टाइम, राइट? अटेंडिंग जस्ट बिकॉज यू हैव टू अटेंड शुड नॉट बी देयर ना. JNB भावनगर का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है यार, तुम लोग हमेशा अटेंड किया करो, ठीक है? ऑप्शन सी. ओके, ग्रेट. एंड आई एम कमिंग टू योर स्कूल डेली. आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज आई वांट यू टू वेट फॉर मी. ठीक है, चलो. ओके, JNB भावनगर, I got your answer and that is correct. I have launched the poll also. You can also answer here. Others, please. Tarun, Srujana, Veena, Keshav, Kaushik, Priya, Suraj, Keshav. अच्छा, 5G नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे थे यार. 4G से ही काम चला लो, क्या करोगे? किसी एक दिन सही से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दो ना, उसके बाद रोज रोज का प्रॉब्लम नहीं होगा ना. चलो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर? कम ऑन, मोर आंसर्स प्लीज. So far I got 7 answers and 8 answers, and most of you are correct. 9 answers. Okay, chalo. So this is a capacitor plate, right? And then there is this dielectric, and then there is this dielectric. But in this region there is no dielectric, so there is a vacuum. And here also there is vacuum, and here also there is vacuum. Now there is plus Q charge here, plus minus Q charge here. What will be the electric field status? So I have told you, if there is dielectric in the space, electric field will decrease by K times. So here, since there is no dielectric, electric field will be E naught. Here there is dielectric, electric field will be E naught by K1.
Here again no dielectric, E naught. Here dielectric is there, K2, so E naught by K2. And here there is again no dielectric, so electric field E naught. अब देखो यहाँ पे K1 is what? K1 is less than K2. It means E naught by K1. E naught by K1 will be greater than E naught by K2. अब आप डायग्राम बैठा लो. सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, if this is my E naught, then here it is E naught by K1, थोड़ा नीचे जाएगा, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा. एंड आफ्टर दैट अगेन ई नॉट, यानी कि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये होगा. फर्स्ट ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये है. अगेन देयर इज डायलेक्ट्रिक एंड दिस वैल्यू इज मोर लेस देन ई नॉट बाय K1. So now you will go more down. Electric field is this, and again electric field is E naught. So again this. So which is the correct answer? It is C. So I hope it is clear. Anyone having any doubt until what is this? Until dielectric and all. So now we will move forward to what is RC circuit, charging and discharging. किसी को doubt है तो बता दो. Anyone having any doubt? I'm giving you one minute to post your doubts. Anyone is having any difficulties? कोई परेशानी है तो बताओ. कुछ तो बोलो. कोई बोलता ही नहीं, सब चुप रहते हो तुम लोग. Am I audible? Am I audible to everyone? Yes, no doubt. चलो, डाउट नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए. नाउ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. ठीक है, चलो थैंक यू. बहुत इजी भी है. तुम लोगों ने, कितने लोगों ने केवीएल पढ़ लिया है? दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. करंट सारे सबके स्कूल में हुआ होगा. बेसिक तो पढ़े होगे तुम लोग. केवीएल लगाना कितने लोगों को आता है? फास्ट बताओ. हाँ, हैंड रेज करना है जितने लोगों को आता है, या थम्स अप देना है. whatever you feel like comfortably. Let me know. Yes, Navdeep, very good. Others are also there. Good. ठीक है. JNB भावनगर. Computer lab, yes ma'am. Okay, what's your name? Please write your name. Huh? I feel it very good while I take your name. It feels good. चलो ठीक है, बहुत लोगों को पता है. जिनको नहीं पता है उनकी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि पता होना चाहिए. चलो मैं वैसे भी बता ही दूंगी, क्योंकि करंट नेक्स्ट चैप्टर है, तो वी विल रीड ओवर देयर. JNB Kadappa, वेरी गुड. चलो लेट्स स्टार्ट. So what we are going to do, we are going to deal with charging of capacitor. So we have a capacitor and we are going to charge it by connecting a resistor and a battery. ठीक है. So we are going to do this thing here. यहाँ पे देखो मैंने क्या किया. There is a circuit here. There are 3 switches I have taken. Switch 1, switch 3, switch 2. Now, if I have to charge the capacitor, what should I do? I should connect this capacitor with a battery. So I will connect switch 1 with switch 3. Done. So connect this switch to charge the capacitor. The moment you will connect this 1 and 3, what will happen? Current will start flowing. So current will start flowing. Now, suppose कर लो at any time t, like at t equal to 0, we maintained the connection. So at just before t equal to 0 or at t equal to 0, your charge was 0, है ना? And at any time t, after t time has elapsed, then what will happen? यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा. तो suppose कर लो small q charge. ठीक है, अब चलते हैं आगे. सो अब तुम क्या करो, केवीएल लिखो, लूप ABCD. यहाँ पे जो लूप दिख रहा है ना ABCD, इसमें केवीएल लिख. केवीएल कैसे लिखते हैं? सो इफ वी हैव टू राइट KVL in ABCD, let's start from A. So first write the potential of A. I have written A. Now start moving. ABCD में लिखना है ना, so you have to move like this. ABCD. Again A, ABCD A. इस लूप में हम लिख रहे हैं.
ठीक है. So we will start moving from A and move towards B, C, D, again come to A. So starting from the A, I have written the potential of A, because in KVL we write potential of whatever things we encounter in the way or on the way, sorry. So when you will start moving from A, first thing that you will encounter is battery, and you are going from positive to negative terminal. That is why positive sign, and here plus. Now you are moving in the direction of current, because if this is a positive terminal, current must have been flowing like this. So we are moving in the direction of current. And when we move along the current and there is resistor on the way, then potential drop on the resistor is written with negative sign. And what is the logic behind it? Because we see if potential is dropping, we give negative sign. If potential is increasing, we give positive sign. जैसे यहाँ पे देखो ये negative terminal था, ये positive terminal था. If we are moving in this direction, potential is increasing, so positive sign. If we are going in this direction, in the direction of current, that is we are moving from high potential to low potential. That is why negative sign. है ना, क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, हाइट से लो जाता है, राइट. दैट इज वाई नेगेटिव साइन माइनस आई आर. उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद रास्ते में मुझे क्या मिला? कैपेसिटर. नाउ if this is a positive terminal, then this plate of capacitor will take positive charge and this will take negative charge. Again we are moving from high potential to low, because positive charge has positive potential, negative charge has negative potential. So again we are moving from high to low potential. We will give negative sign minus q by c. And after that there is no other instrument. We are coming back to va. So plus va again, sorry, इक्वल टू साइन दो और वापस से कहां पहुंच गए? ए के पास. तो दिस इज हाउ वी राइट केवीएल. तो यहाँ पे मैंने लिखा है वी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ए and we moved in this direction of current. So va plus c minus ir and minus q by c. ये प्लस है, ये माइनस है. q by c का मतलब q इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? cv. So potential when charge on capacitor is q is how much? q by c. And then we reached at a, so equal to a. अब देखो ये कट जाएगा और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? E minus q by c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई आर. So this is what I have done here already. So I have pre-written so that time कम लगे. ठीक है. अब देखो इसको अरेंज करो. EC minus Q, इसको हमने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, सॉरी. EC minus Q by C is equal to IR. I can be written as what? I को क्या लिख सकते हो? dq by dt, rate of flow of charge. ठीक है. So dq by dt into R. Now what we will do? अब देखो EC minus Q by C है. सेम वेरिएबल को सेम साइड में लेकर चलो. जैसे यहाँ पे what you can do, you can write here EC minus Q है ना, it has Q variable and here this is dq. तो इन दोनों को एक साथ लेकर आओ. What it will become? dq by EC minus Q and here it is dt. dt को इधर ले जाओ divided by RC, something like that. And if we have to calculate Q as a function of time t, we will integrate it. And whenever you integrate, what you do? You give limit. So at here time is there, so t equal to 0 लो, क्योंकि time starts from 0. And at t equal to 0, Q is how much? Initially capacitor was what? Discharged, so 0. And at any time t, charge on capacitor को क्या मान लो? Small q मान लो. अब इसको solve करोगे. So this is our relation, right? This is the relation we have got. Now we need to solve it. अब कैसे solve करते हैं? तो तुम लोगों को integration पता होगा. dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है. Do one thing, AC minus q को x मान लो, suppose. Do the partial differentiation. If I'm not audible, you can let me know at any point of time. ठीक है. So partial differentiation, if you will do, this is a constant. Constant का partial differentiation 0 minus dq is equal to dx. ठीक है. So that thing I will put here. इसको मैं integrate कर रही हूँ. ठीक है. So dq की जगह क्या लिखोगे आप? Minus dx you can write. So write here minus dx divided by EC minus Q. EC minus Q को मैंने x लिखा है. So x, this is this. So this will become minus ln x.
अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस ln x को क्या माना था हमने, EC माइनस Q. So what will be the integration of this thing? Integration of this thing will be minus ln EC minus Q. तो चलो next step यही है, minus ln EC minus Q is the integration. ठीक है. Now what you will do, you will put the value, and if you are going to put the values here, this is, यहाँ तो t 0 से t तक था, so this became t by RC, and this will be minus ln Q का वैल्यू Q रखो, EC माइनस Q, माइनस क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 0 रखो, ln Q का वैल्यू 0 होगा तो ये EC हो जाएगा. ठीक है. एंड यू ऑलरेडी नो वन मोर थिंग, दैट इज योर व्हाट, तुम्हें पता है एक रूल है कि ln A minus ln B can be written as what? It can be written as ln A by B. So यहाँ भी ln A minus ln B can be written as ln A by B. The same thing I will do ahead. So यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, T by RC को लिख दिया minus ln EC minus Q by EC. Now there is this thing, and there is one more things that you must have done in your 11th class. What is that? If ln x is equal to y, suppose ln का मतलब क्या होता है, log का base e है, is equal to y. So if you have to remove the log, then you can write, suppose यहाँ से log ln हटाना है, x equal to something you have to write, then you can write x equal to whatever is the base will go here and y will become power 2. So this is how you can break it. ठीक है. Similarly here, if I have to remove this ln, what I can do, I can write EC minus Q by EC is equal to e to the power minus t by RC. So the same thing I will do in the next step, and this is this. ठीक है. Now let's write the value of Q. So यहाँ से देखो EC minus Q को क्या लिखोगे, EC e to the power minus t by RC. We have to calculate Q. Q will become EC minus EC e to the power minus t by RC, and this will become how much, CE को common ले लो, 1 minus e to the power minus t by RC. ठीक है. So what is the value of Q as a function of time? Q as a function of time is this. So this is the relation we are getting. Anyone having doubt so far? किसी को है तो जल्दी से बताना. Anyone having doubt so far? Come on everyone, जल्दी बताओगे तो थोड़ा बेनिफिशियल होगा. Everyone done with this? ठीक है. चलो, if you are done, then you can see here what are the conclusions that we can draw. If you put here t equal to 0, चलो, so Q equal to हमारा कितना आया, EC 1 minus e to the power minus t by RC. This is the value we have got. Now here I am taking Q. If you put t equal to 0, then what will be the value of Q? Q will be equal to EC 1 minus e to the minus t by RC. So e to the power क्या हो जाएगा, अगर t का वैल्यू आप 0 रख रहे हो यहाँ पे, अगर t 0 है तो t by RC क्या हो जाएगा, 0. So this is e to the power 0, and that is equal to 1. So 1 minus 1 will become 0. So t equal to 0 पे Q क्या है, 0. Now let's take another time t equal to infinity. So t equal to infinity पे हमारा चार्ज कितना होगा, Q equal to EC 1 minus e to the power minus infinity, and e to the power minus infinity का वैल्यू क्या होता है, if you remember, this is equal to 0. So if this is equal to 0, Q will become EC. यानी कि after long time, very long time, what will happen, charge on capacitor will be how much? Charge on capacitor will be equal to C into E. That is capacitance into total voltage of the battery. It means whatever is the voltage of battery is totally dropping on the capacitor. No voltage is dropping on the resistance, it means. And if there is no drop here, it means current is what? Current is 0. Current is what? 0. So at t equal to infinity, our capacitor will get completely charged, and maximum value of charge is how much, capacitance into value of voltage of the battery. Done. So let me summarize it here for you. At t equal to infinity हमें क्या मिला, Q equal to Q naught, and Q naught value is how much, it is equal to capacitance into voltage of the battery. Done. And at this point of time,
current in the circuit is zero. Current in the circuit is zero because all the voltage is here. It means here there is no voltage, and voltage drop across resistor is written as what? IR. So if here V is zero, it means I is also zero because R is not zero, right? So this is, now there is a term that is RC. So what is the RC here? RC has a significance. RC is called your time constant. This is called what? This is called time constant. And what does it talk about? It talks about how fast or slow the capacitor will get charged. That I will discuss while I will explain you the graph. But this is a time constant and its dimension will be equivalent to that of time. Okay? So this is time constant. So capacitor is conductor initially at t equal to 0 because I proved there Q का value कितना आया है Q naught 1 minus e to the power minus t by tau. चलो एक काम करते हैं करंट निकाल ही लेते हैं. So current हमारा क्या होगा dq by dt. So if you go on to do this dq naught by dt minus d e to the power minus t by tau. Tau means RC. RC को मैं क्या लिखूंगी अब टाइम कांस्टेंट टाउ. Tau dt. This is a constant, its differentiation will be 0 and this is minus of, again एक minus आएगा t by, sorry, e to the power minus t by tau. समझ रहे हो? If you remember the differentiation of ex is equal to how much? Ex. And if it has power, negative power, then that negative will come outside as a coefficient. Okay. So here this is e to the power minus t by tau, but there is also a constant. So this tau will come as 1 by tau. तो ध्यान से देखो मैंने करंट को सही से निकाला है या नहीं. एक काम करती हूँ सारी चीजें हटाती हूँ क्योंकि कुछ मिस्टेक किया मैंने. Let me write this here for you. So Q equal to कितना है? Q naught 1 minus e to the power minus t by tau. Q equal to क्या लिखोगे? Q naught minus Q naught e to the power minus t by tau. dq by dt will be your current. इस differentiation 0 minus इसका differentiation कितना होगा? e to the power minus t by tau का differentiation होगा 1 by tau minus 1 by tau e to the power minus t by tau. So let's put the value Q naught by tau और एक और minus sign था minus minus plus e to the power minus t by tau. Now let's put the value of tau and Q naught. This is CE and this is RC. E to the power minus t by tau. So CC will get cancelled. E by R maximum current I naught e to the power minus t by tau. Now let's see here at t equal to 0. If you put here t equal to 0, I का value कितना होगा? I naught. क्योंकि e to the power 0 का value 1 होता है. So initially current is maximum. It means this conductor is this capacitor is acting as a conductor because इस पे कोई potential drop नहीं है at t equal to 0. और potential कोई कुछ भी drop कहाँ नहीं करता if that is a conductor. ठीक है, अगर resistance उसका कुछ ना कुछ होगा then some potential will drop. It means at t equal to 0 capacitor is acting as a conductor. And what will happen at t equal to infinity? अगर आप current निकालो t equal to infinity पे I equal to I naught e to the power minus infinity and its value is 0, right? So current is 0. It means finally in a steady state at t equal to infinity after very long time what will happen? There will be no current in the circuit because all the potential is dropping here as you saw earlier. Okay, so this is this. Everyone clear with this up to this? किसी को कोई doubt है? Anyone having doubt? नहीं, ठीक है, चलो. सो मैंने तुम लोगों को क्या क्या बताया? मैंने बताया Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा इफ यू आर चार्जिंग द कैपेसिटर. Q इक्वल टू Q नॉट 1 minus e to the power minus t by RC. RC is what? Time constant. Q naught is what? C into E. And what is the formula of current? I equal to I naught e to the power minus t by RC. I naught is what? Maximum current. So definitely that will be E divided by R. ठीक है. Initially t equal to 0 पे capacitor is acting as a conductor and finally at very long time in a steady state capacitor will act as an insulator. Now Q versus T curve during charging. अब देखो जो भी हमारा फॉर्मूला आया ना Q इक्वल टू क्या आया? Q नॉट 1 minus e to the power minus t by tau.
आई कितना आया, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वी शुड नो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, हाउ टू मूव इट, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले मैं तुम लोगों को बता दूं ई टू द पावर एक्स का ग्राफ तुम लोग कैसे बनाते हो। दिस इज द ग्राफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, एंड इफ y इक्वल टू ई टू द पावर x का मैंने ग्राफ बनाया, डन है। अगर मैं तुमसे पूछूं y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, सो यू आर मेकिंग x नेगेटिव, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। If you are making x negative, graph will be what? Graph will be mirror image in the y axis. So इसका mirror image in the y axis will be how much? What? It will be this. So this is e to the power minus x. अगर मैं यहाँ तुमसे बोलूं कि y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ बना, तब कैसे बनाओगे? सो e टू द पावर x का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। So this is y equal to e to the power x. Now you are writing y equal to minus e to the power x. It means you are making y negative because y का value क्या था? E to the power x. If you are putting negative sign here, it means you are making y negative, right? So if y is becoming negative, graph will be mirror image in the x axis. So यहाँ पे क्या करोगे? ऐसा, ये हो गया ग्राफ y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। सिमिलरली y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये है। इसका मिरर इमेज किस में लोगे? एक्स एक्सिस में। ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। सो दैट ग्राफ विल बी दिस। अब चलो हम लोग पहले करंट का ग्राफ बनाते हैं। सो करंट का ग्राफ क्या है? करंट है आई नॉट ई टू द पावर माइनस एक्स समथिंग। सो ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा दिख रहा था? कैसा था बताओ? e टू द पावर माइनस एक्स मैंने ऐसा कुछ बनाया है, ऐसा बनाया ना। अब ये है मेरा टाइम एक्सिस, ये है करंट का एक्सिस, सॉरी करंट का एक्सिस। बट टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज द नेगेटिव थिंग, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव पोर्शन ऑफ ग्राफ को कट कर दो, ग्राफ विल बी दिस फॉर आई वर्सेस टी। व्हाट विल बी क्यू वर्सेस टी? क्यू वर्सेस टी अगर बनाना है तो क्या करोगे? ग्राफ क्या है तुम्हारा? कुछ ऐड हो रहा है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स में। तो देखो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा था? ऐसा, ठीक है। एंड इन दिस ग्राफ you are adding something, some constant you are adding to this, है ना। यहाँ पे कुछ constant added है ना, one is there, right? So you will move it a bit up by how much? 1 unit, and this is actually 1 unit. क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर 0 करोगे, that is here x is 0, y will become 1, यानी कि this is 1. This is a graphical thing you all must have studied in class 11, but I'm explaining because I just want to revise. यहाँ पे ये ऐसे, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसको ऊपर उठा ले, उठाकर 1 यूनिट ऊपर उठाकर ले जाओ, it will become something like this. Again cut what is in the negative time direction because time cannot be negative, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा? आई वर्सेस क्यू वर्सेस टी का, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ यहाँ हो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट टाइम कांस्टेंट। सो क्यू इक्वल टू क्या लिखते हो? क्यू नॉट 1 माइनस टी बाई आर सी। अब सपोज करो मैंने टी इक्वल टू आर सी रखा, उस टाइम पे चार्ज कितना होगा? कितना चार्ज कैपेसिटर पे होगा? क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 and q naught 1 minus e to the power what it will become? e to the power minus 1 का वैल्यू कितना होता है? दिस इज 0.37, 0.37, ओके, दैट इज द वैल्यू। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.63 q नॉट। इसका मतलब एट टाइम इक्वल टू टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर इज चार्ज अप टू 63%, क्योंकि यहाँ पे Q बाई क्यू नॉट इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63%, ठीक है। सो इफ टाइम कांस्टेंट इज बिग, इट मींस इट विल टेक मोर टाइम टू गेट चार्ज अप टू 63%, एंड इफ टाइम कांस्टेंट इज स्मॉलर, इन वेरी स्मॉल टाइम इट विल गेट चार्ज अप टू 63%। सो अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे ग्राफ बना दूं, एक ऐसा हुआ एंड एक ऐसा, किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है? देखो ये बहुत जल्दी राइज किया है। सो इसका टाइम कांस्टेंट टाउ 1 ले लो, इसका अगर टाउ 2 ले लो, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जब ये चार्ज, ये क्यू का वैल्यू इतना है,
इतने टाइम में, और इसका उससे कम टाइम में क्यू का वैल्यू सेम हो गया। सो इस टाइम कांस्टेंट इज व्हाट टाउ टाउ का रिलेशन क्या होगा, टाउ विल बी लेस देन दैट ऑफ टाउ। सो अगर तुम्हें ग्राफिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है ना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट अ मैथमेटिक्स। नाउ आई वर्सेस टी कर मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया कैसा आया था। आई कितना था, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा था, ये ऐसा गया, है ना। सो एट टी इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू आई नॉट, एंड आफ्टर दैट करंट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कुछ नहीं करना है, जो काम हमने चार्जिंग में किया सेम इक्वेशंस लिखने हैं। तो चलो मैं तुम लोगों को गो थ्रू करवा देती हूँ, ठीक है। ये तुम लोग अब खुद से भी कर सकते हो, बट स्टिल आई विल टेक यू थ्रू। अब देखो ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, अगर लंबे समय तक 1 और 3 कनेक्टेड है, देन दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ठीक है। नाउ इफ वी वांट टू डिस्चार्ज इट, 1 और 3 को डिस्कनेक्ट करेंगे और किसी रजिस्टर के थ्रू उसको कनेक्ट कर देंगे विदाउट बैटरी, देन व्हाट विल हैपन, जैसे देखो ये अगर फुल्ली चार्ज है, so it has positive charge, it has negative charge. If you are disconnecting this and connecting this, then this capacitor will act like a battery, क्योंकि इस पे यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव। It will start giving or sending current to the register like this, ठीक है। तो as it will send current or as more time will elapse, what will happen, your positive charge will decrease and your negative charge will decrease, capacitor will start getting discharged। तो चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे, केवीएल लिख डालो, क्योंकि अगर तुम्हें Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। सो केवीएल लिखो इस लूप में, डी से स्टार्ट करके डी तक आओ, इस लूप में केवीएल लिखा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वी आर गोइंग टू राइट द केवीएल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो क्या लिखोगे, वीडी, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, लो से हाई प्लस साइन, प्लस क्यू बाई सी, माइनस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस आई आर इक्वल टू वी। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई हैव डन इट ऑलरेडी। क्यू बाई सी इक्वल टू आई आर। हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे करंट को क्या लिखोगे, dq by dt तो है, डन। बट नोटिस केयरफुली, हियर चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज डिक्रीजिंग, चार्ज इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम। सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग dq, dq विल बी इनहेरेंटली नेगेटिव। ये क्या होगा, इनहेरेंटली नेगेटिव, क्योंकि dq इज व्हाट, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। So at any point of time, final charge is less than initial charge. So this is inherently negative. और जब हम रेशियो लिखते हैं तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो टू मेक इट पॉजिटिव, करंट को यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस dq by dt, बिकॉज dq इज इनहेरेंटली नेगेटिव, ठीक है। सो q by c को मैंने क्या लिखा, माइनस dq by dt into r। नाउ यू अरेंज द थिंग्स, dt by rc माइनस dq by q, dq by q का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln q। पुट द वैल्यू हियर, t by rc को क्या लिखोगे, माइनस ln q minus ln q naught. Again same thing you will do, t by rc equal to minus ln q by q naught. If you are going to again do the thing, q by q naught क्या हो जाएगा, ln को हटाना है तो यहाँ से देखो इसको माइनस हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं। तो if you are removing ln, q by q naught क्या हो जाएगा, e to the power minus t by rc. So q is this, ठीक है। तो this is your what, this is charge as a function of time इन द डिस्चार्जिंग सर्किट। अगर करंट निकालना है, डू माइनस dq by dt, क्योंकि करंट क्या था, माइनस dq by dt। इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, माइनस साइन q नॉट d e to the power माइनस t by टाउ, ठीक है। एंड इस डिफरेंशिएशन विल बी हाउ मच, माइनस q नॉट by टाउ e to the power माइनस t by rc। सो इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, इट विल बिकम, टाउ का वैल्यू पुट कर दो, q नॉट by what will become rc e to the power minus t by tau। अब देखो q नॉट क्या था तुम्हारा, q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज हियर, और वो कितना था, ce था। सो इफ यू विल पुट हियर ce, इट विल बिकम e by r। सो करंट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं तुम लोगों के लिए करंट लिखूं तो ये है तुम्हारा i नॉट e to the power minus t by tau, i नॉट का मतलब e by r। सो इफ यू रिमेंबर, करंट का फॉर्मूला दोनों ही केस में सेम आ रहा है, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग। अब देखो यहाँ पे Q वर्सेस T कर क्या होगा, Q इक्वल टू Q नॉट क्या था,
e to the power minus t by tau. Graph will be what? Graph will be this, है ना? And at t equal to 0 charge is q naught. Similarly करंट का ग्राफ बनाना है, सेम एज चार्ज होगा क्योंकि फॉर्मूला सेम नेचर का दिखता है, सो इट विल बी दिस. ठीक है. सो देखो मैंने तुम लोगों को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में पढ़ाया क्या, मैं समराइज कर देती हूँ. सो इफ यू आर चार्जिंग द कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, एंड इन मीन टाइम ना ये फीडबैक फॉर्म है, एक्चुअली दिस इज इम्पोर्टेंट. तो मैं ओके, आई डिडंट एंड द फॉर्म. ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. चलो ठीक है, तो चलो समरी करते हैं इसका. व्हेन वी वर चार्जिंग इट, जब हम इसको चार्ज कर रहे थे तो हमारा Q का वैल्यू क्या था? Q था Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, एंड करंट वाज हाउ मच? I नॉट e to the power minus t by rc. Now let's write Q naught का वैल्यू. Q naught is your CE. Let's write I naught का वैल्यू. I naught is your E by R. And I told you initially capacitor at t equal to 0, capacitor is what? Capacitor is conductor. क्यों? क्योंकि at that point current is maximum, fully acting as a conductor. At t equal to infinity, capacitor is what? Insulator. Why insulator? Because at t equal to infinity, I is becoming what? अगर यहाँ पे infinity रखोगे current 0. So सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं ब्रेक है. ब्रेक का मतलब ब्रेक तो है नहीं, इसका मतलब जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर. तो दिस इज दिस. नाउ वी स्टडीड समथिंग इन चार्ज डिस्चार्जिंग. डिस्चार्जिंग में हमने क्या किया? एक चार्ज कैपेसिटर को वी कनेक्टेड दिस विथ अ रजिस्टर. व्हाट विल हैपन? इट विल सेंड आउट करंट लाइक दिस, एंड Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें क्या मिला? Q नॉट e to the power minus t by tau. I कितना मिला? I naught e to the power minus t by tau. Both the relations are same I का. And here again Q naught equal to CE. I naught is equal to what? I naught कितना आया हमारा? E by R. अगर मैं ग्राफ की बात करूं चार्जिंग के लिए, तो देखो चार्जिंग के केस में जो हमारा ग्राफ था, करंट Q is equal to Q naught 1 minus e to the power minus t by tau, ये ग्राफ था. और डिस्चार्जिंग के लिए if I draw the graph, then this graph was this. So this is for discharging Q naught e to the power minus t by tau. And if you draw the current का graph is same for both like this, because in both case current with time is decreasing and becoming at infinity. So this is both for charging and discharging. उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया, दैट वाज योर टाइम कांस्टेंट आरसी. आरसी को हमने क्या बोला? दिस इज अ टाइम कांस्टेंट एंड इट्स डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ टाइम. इंपॉर्टेंट थिंग है. उसके बाद व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरसी? सो इट विल टॉक अबाउट, जैसे जब मैं तुम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगी वहां पे एक आरसी फिल्टर होता है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो टाइम कांस्टेंट से क्या पता चलता है? हाउ मच फास्ट कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज, एंड एट द सेम टाइम हाउ फास्ट इट विल गेट डिस्चार्ज. ठीक है. सो मैंने पढ़ाते वक्त चार्जिंग का एग्जांपल लिया था, अभी मैं डिस्चार्जिंग का लेकर चलती हूँ. तो यहाँ पे देखो, अगर अगर मैंने यहाँ लिखा Q इक्वल टू Q नॉट, सॉरी Q इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय RC. सपोज कर लो मैंने आर टाइम को RC के बराबर रखा, Q कितना हो जाएगा? Q नॉट e टू द पावर माइनस 1. सो दैट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 0.37, यानी कि Q बाई Q नॉट इंटू 100 विल बी इक्वल टू 37%. डन. इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब हमारा कैपेसिटर 37% से डिस्चार्ज हो गया. डन. So if this time constant tau is suppose large, very much large, so our capacitor will get discharged very slowly. So if you want to suppose कर लो तुम कोई डिवाइस बनाना चाहते हो और चाहते हो कि कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज ना हो, what you will do? You will devise it in such a way कि RC का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा, यानी कि you will take a very large capacity, and that is what we do in RC filter. ठीक है.
सो टाउ का सिग्निफिकेंस है, दिस इज द थिंग। और डायग्राम में कैसे दिखेगा, अगर अगर तुम्हारा टाउ इज लार्जर देन इट विल लाइक वो और स्लोली 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 ऐसे जाए। if its tau is large, sorry small, then it will be more like this। कंपेयर कर सकते हो, इट वोंट टच द टाइम एक्सिस, सॉरी, इट विल गो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो एनीवन हैविंग एनी डाउट, इट हैज बीन डॉट फोर। एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। देखो अगर तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास को अगर फॉलो किया है तो इट मस्ट हैव बीन इजी फॉर यू टू फॉलो द क्लास। चलो, कितने लोगों को डाउट है और कितने लोगों को मजा आया पढ़ने में, ये भी बताओ, मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है। I want to make class more easily understandable. For that, I also need you to come with certain kind of homework। होमवर्क का मतलब पहले सेशंस को पढ़ के आना, क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंगली लेना, थोड़ा मजे करना, ये जरूरी है। देखो मजा सिर्फ वो नहीं होता है कि क्लास के समय नहीं पढ़ना, दैट इज नॉट ओनली एक्साइटमेंट। ये भी एक एक्साइटमेंट होता है कि किसी क्लास में जाकर तुम जो भी पढ़ाया गया यू आर लर्निंग। बिकॉज इट्स नॉट एन इजी टास्क ना, कि अगर तुम कोई भी क्लास में सपोज 40 मिनट बैठ रहे हो एंड यू आर लर्निंग अ लॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यू आर सेविंग सो मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज इन 40 मिनट यू आर गेटिंग कवर्ड सो मच, है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव सिचुएशन है। चलो, सो दैट इज हाउ आई कंप्लीटेड योर कैपेसिटर। कैपेसिटर इज डन, ठीक है, इट इज डन। एंड नेक्स्ट क्लास से मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी। एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी के पास कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, प्लीज। I feel like there is no doubt, so each one of you take care of yourself। Thank you for your attendance, presence, attention, replies, solution, everything। Thank you for everything, Bharat। Thank you, bye bye, take care everyone, stay safe, keep enjoying, keep reading, and keep solving more questions from Capacitor। Sneha, thank you so much। You didn't answer my question, from which JNB you are? JNB होगा, चलो डन है। Chalo, nice meeting everyone from Hyderabad region। I got a chance to teach you also, so it was very good experience। Thank you everyone for your participation। Bye bye, take care।